गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. माझा आवाज येतोय? Yes, sir. Saurabh, am I audible? Saurabh Poddar. Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So only 26, 27 students are there. Rutuja Chitte, are you there? Yes, sir. What we discussed in last lecture? Sir, I was absent on that day. Okay, on which day? I think on Tuesday. Tuesday. Okay, just a minute. Shantanu Kulkarni, can you tell me? Shantanu, are you there? Yes, sir. Okay. What we discussed in our last lecture? सर बॉयलर बद्दल बघितलं होतं. अच्छा, बॉयलर बद्दल. तू मागच्या लेक्चरला नव्हतास का? होतं सर. ते एअर गॅस लक्षात आहे ना सर. Okay. Then Tanuja, are you there? Tanuja. Yes, sir. What we discussed in our last lecture? SI engine, petrol, diesel, IC engine. SI engine, petrol, diesel, IC engine. Very good. Was you present in our last lecture? Yes. Due to internet connection. Sorry, you are not audible. Half lecture attend केलं होतं. Tanuja, Due to तुझा आवाज internet येत नाही. Hello. Yes. सर मी हाफ लेक्चर अटेंड केलं होतं. अच्छा, हाफ लेक्चर. What is this half lecture? हाफ लेक्चर नंतर इंटरनेट गेलं. काय इश्यूज होते? पूजा मोरे, was you present? Yes, sir. काय आपण शिकलो लास्ट लेक्चर मध्ये? Sir, thermodynamics law, first law and second. ओके, वेरी गुड. दानिश, आप हो?
यस सर आप बताओ क्या हमने डिस्कशन किए लास्ट लेक्चर में? सर लॉ देख रहे थे सर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देखा Laws. जीरो लॉ देखा Okay, very good. Good. See, means अभी हमने 6 से 7 बच्चों से पूछा, उनमें से आखिरी 3 लोगों ने सिर्फ जवाब दिया और बाकी के 3 ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब लेक्चर अटेंड किया फर्स्ट थिंग, बट फिजिकली किया। ठीक है ना? ऐसा मत करो। और अगर फिर भी चलो ठीक है, लेक्चर अटेंड नहीं किया, आप absent थे, कुछ पर्सनल रीज़न से पैकेज ख़त्म हो गया और कुछ XYZ रीज़न रहेगा, बट एटलीस्ट कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स। जो भी पोर्शन हमने डिस्कस किया है वो आप शेयर करो और बाद में खुद पढ़ो। विदाउट योर ओन स्टडी, योर ओन थरो स्टडी, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी सॉर्ट ऑफ MCQ। अगर ये नॉर्मल एग्ज़ाम है ना, तो मैं समझ सकता हूँ, चलो ये ठीक है, बट MCQs है ना, यू हैव टू बी परफेक्ट। ठीक है? सो स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग SME पढ़ना स्टार्ट किया है? ऐसे कितने लोग हैं? I started, sir. कावेरी ने स्टार्ट किया, ओके। और कितने हैं? सर मैंने भी स्टार्ट किया है। आशुतोष ने किया है, ठीक है। मैंने भी सर Sir, I थोड़ा started. थोड़ा पाटिल, मोरे, मैंने सौरभ, भी ये थोड़ा थोड़ा साक्षी। यस सर स्टार्टेड स्टडी गुड गुड, हमने भी Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. हमने भी इट इज गुड। सो shall we plan our Yes, sir. online MCQs test? Yes, sir. First unit. यस सर यस No, not on first unit. We will do it for both the units. Maybe on Chaleगा, Monday, chaleगा. we will Okay, sir. Monday or Tuesday, we will finish our 2 units, and on both units we will have MCQ test on Saturday. Maybe on Saturday. Is it okay? ओके सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है। So start your preparations. चलो आज अभी हम लोग बचा हुआ पोर्शन देखते हैं। ठीक है? I think it is visible to all of you. Is it visible? Yes, sir. यस सर Very good. Now, I think we had discussed this heat reservoir, heat source, heat sink, but फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं. What is the heat reservoir? ऐसा रिजर्वायर जिससे हम लोग अगर हीट एब्सॉर्ब करते हैं या फिर जिसमें हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं, बट इसका कोई भी असर उसके खुद के टेम्परेचर पे अगर हो नहीं रहा है, देन इट इज व्हाट इज द हीट रिजर्वायर और इट इज द एग्जांपल ऑफ द हीट रिजर्वायर. सो बेस्ट एग्जांपल इज द एटमॉस्फेयर. वहाँ से हम लोग कुछ भी हीट एब्सॉर्ब करेंगे या फिर कुछ भी हीट रिजेक्ट करेंगे तो उसका खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ओके, देन हीट सोर्स, the reservoir which supplies the heat, that is nothing but the heat source. And heat sinks, the reservoir which absorbs the heat. Okay, जो heat absorb करता है, that is nothing but the heat sink. ठीक है? Then we had discussed about this heat engine. ठीक है? ये heat engine के लिए हमने example भी देखा था, that is nothing but the example of SI engine और CI engine. ठीक है? And we had discussed about the efficiency of the heat engine. ठीक है? The efficiency of the heat engine is 1 minus Q2 by Q1. That is what is the formula. एग्जाम में आपको कैसे MCQs पूछे जा सकते हैं, that also we had discussed in the last lecture on this particular topic. उसको कैसे भी करके पूछा जा सकता है, so that we had already discussed. ठीक है? Now we will discuss the next part. Favorite part, isn't it? Refrigerator. Okay, so a refrigerator, a device operating on a cycle which removes heat from a low temperature body and rejects it to a body at a higher temperature on the expense of external work supplied. ठीक है? अब ये डेफिनेशन कुछ सुनी सुनी लग रही है आपको? यस सर कहाँ पे सुनिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट
thermodynamics. See, exactly same definition हमने यहाँ पर देखे. Clausius statement, second law of thermodynamics. It is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process to transfer heat from a body at a low temperature to a body at a higher temperature. मतलब जिसका टेम्परेचर कम है वहां से हीट निकाल के जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसे हीट देना, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है. ये कब पॉसिबल है? व्हेन वी हैव अ एक्सटर्नल एजेंसी, एक कोई डिवाइस रहेगा, उस डिवाइस के थ्रू ये पॉसिबल है. ओके, दैट इज व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द क्लॉसियस स्टेटमेंट. ठीक है, उसी का एग्जैक्ट एप्लीकेशन इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेटर. ओके, एंड this is what is the definition of the refrigerator: a device operating on a cycle which removes heat from a low temperature body. ये सबसे important चीज है. कहाँ से heat वो remove कर रहा है? Low temperature body. Now you see, let us consider one example. ठीक है, let us say that we are preserving apples in a refrigerator. ठीक है, हम लोग फ्रिज में एप्पल्स रख रहे हैं. जब हम लोग वो मार्केट से लेके आ रहे हैं, इट इज एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. से राइट नाउ वी आर इन पुणे, एंड इन पुणे द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वहां से लेके आए हम लोग, हमने उससे फ्रिज में रख दिया. फ्रिज का खुद का टेम्परेचर कितना रहेगा? से इट इज इन बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. लेट अस assume that it is in the 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है कहाँ से? 30 से लेकर 10 तक. तो वहां से वो हीट रिमूव करेगा. आर यू गेटिंग मी? एंड देन दैट पर्टिकुलर रिमूव्ड हीट विल बी रिजेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर ऑलरेडी 30 में है. तो वहां पर वो फिर से वो जो हीट है वो रिजेक्ट करेगा. आर यू गेटिंग मी? सो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एन रेफ्रिजरेटर. सो again, if we consider the same system what we considered in the heat engine, but there are few changes. Okay, heat engine में हम लोग फिर से एक बार heat engine रिवाइज करते हैं. यहाँ पे देखो, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है which is at temperature T1 and it is called as a source. Okay, then here we have heat engine, then we have a sink which is at low temperature. ठीक है, and that temperature is T2. Okay, now some heat we have supplied, that heat is Q1 heat to the heat engine. ठीक है, heat engine ने वो Q1 heat में से कुछ heat utilize की and then it is giving us the output. ठीक है, so that output is nothing but the Q1 minus Q2. Okay, and some heat which is being what we can say rejected in the atmosphere, that is nothing but the Q2. So what output we are going to get ultimately? Q1 minus Q2. ठीक है, but here what we can say? Sir, Yes. Yes, Saurabh, go on. sir, बॅत होतो तुम्हाला हे मीटिंग मधून मी. म्हणजे what is the problem? डायरेक्ट बॅत होती सर मीटिंग माझी. अच्छा, you can leave the meeting and again you can join the meeting. हा नाही सर. सेम इश्यू होतोय, एखाद्या दुसऱ्या डिव्हाइस वरून ट्राय कर, किंवा तुझं पॅकेज संपलंय का चेक कर आणि दुसऱ्या डिव्हाइस वरून जॉईन कर. ठीक आहे, चालेल सर. ओके. कुठे होतो आपण? हा, येस, वी वर कन्सिडरिंग द फ्लो. ठीक आहे, द फ्लो इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, दॅट इज व्हॉट यू हॅव टू पे द अटेन्शन. हा जो काही फ्लो आहे, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, नाउ यू सी, if we are discussing the refrigerator, then the flow is different one. ठीक है, what it is stating that from a cold body, if we have absorbed the Q1 heat, isn't it? Then sorry, Q2. If we have absorbed the Q2 heat from a cold body, then some heat will be utilized and Q1 heat will be sent to the atmosphere. And to run the refrigerator, what we need? We need an electricity. Means what? We need an input. So input will be work of refrigerator. WR will be the
work of refrigerator, and that is nothing but the input. So once we give the input to the refrigerator, it will absorb the heat, which is nothing but the Q2, and it will reject Q1 heat to the atmosphere. It will not happen that it will absorb the heat Q2 and it will reject Q2 in the atmosphere. Some heat will be utilized by the refrigerator, isn't it? And that is why Q2 and Q1 both are different. So our efficiency formula is same, output upon input. But over here, what is our output? Can you tell me? Why Q2 is our output? Why not Q1? Yes, anyone? Why our output is Q2, not the Q1? Are you there, all of you? आहेत का सगळे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, मसाला. sir. Yes, sir. अक्षय पुजारी, are you there? Yes, sir. हाँ, सांग बरं राजा. इथं Q2 आउटपुट का आहे, Q1 आउटपुट का नाही? नहीं समजलं? Okay, say again. I will explain. Sir. Yes. Sir. Yes. Sir, because Q2 heat, the total heat absorbed is Q2, sir. Yes, total heat absorbed is Q2, and as per the definition, what is our output? That we want to remove heat from a low temperature body. Low temperature. Exactly, low temperature body से heat absorb करना, that is what is our first target. हम लोग कौन सी हीट या फिर कितनी हीट हम लोग एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट आवर लुकआउट. आवर लुकआउट इज Q2. दैट इज व्हाई आउटपुट इज Q2. And what is the input? Input is nothing but the whatever work we have supplied to the refrigerator. That is our input. So that input will be Q1 minus Q2, isn't it? So COP. Now over here we call refrigerator. We don't call it as an efficiency. We call it as an what we can say COP, coefficient of performance. Why? That I will tell you. Okay. So the COP of the refrigerator will be output upon input. What is output? Q2. So here it will be Q2. What is input? Input is work of refrigerator, that is WR. And what is WR? So how to calculate WR? So towards this particular circle is positive, away from this particular circle is negative. So QR plus Q2, and this is away from this circle, so this is negative, minus Q1 is equal to 0. Okay, so hence WR is equal to Q1 minus Q2. So work of refrigerator is Q1 minus Q2. Okay, again if we simplify it, what it will be? Q2 upon Q1 minus, or we can keep it as it is. But whenever we are getting an what we can say result or answer of it, it will be always more than 1. But efficiency can't be more than 1. Okay, so COP, coefficient of performance, can be 1, more than 1. That is why the COP is denoted by or the COP is denoted for the refrigerator. Okay, have you understood this? Yes, sir. Very good. Similar way, we have our third device. That is nothing but the heat pump. Okay, this is our third device, which is the heat pump. Now, what it is? Can you see the arrow? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's see the heat pump definition. If the objective of the system is to deliver heat energy at higher temperature T1, okay, T1 temperature में heat reject करना या फिर heat deliver करना, if that is the output, then it is nothing but the example of heat pump. And example is heating in the winter season. Winter season में देखो हम लोग heater on करते हैं, isn't it? So what we are doing over there we are adding the heat. We are absorbing heat
from the atmosphere and we are rejecting heat, maybe in a car, maybe in a closed room, maybe in a closed office. Okay, so that is the thing, but the example of heat pump. Okay, then the temperature T2 corresponds to the ambient temperature. Such a device is called as a heat pump. Have you understood this definition? Or in other words, it is a device which operating in a cycle maintains a body at a temperature higher than the temperature of an surrounding. Then that is the example of heat pump. Surrounding से ज़्यादा temperature maintain करना ये किसका काम है? Heat pump का काम है. Okay. Now, if we consider the previous diagram, you can see that this diagram is quite similar with the diagram of the refrigerator, isn't it? Why? Because of the direction. ठीक है? Direction is upward. Over there in the engine it was downward. ठीक है? अब देखो यहाँ पे from the atmosphere we are absorbing the Q2 amount of heat. Okay, and to the hot body we are rejecting the heat or delivering the heat, that is nothing but the Q1. So our output will be Q1. And what input we are going to give? We are giving the input as an work of an pump. Means we are giving input as an electricity, isn't it? So that is nothing but the work of an pump. So this is what is the input and this is what is the output. So our COP will be output upon input. Output is Q1 upon Q1 minus Q2, and that is what is the formula for the COP of an pump. ठीक है? So see over here you can see it is 1 minus Q1 upon Q2, like that. Okay, or you can keep it as it is also. Why it is Q1 and for the refrigerator this is output is Q2 and for pump output is Q1. Have you understood this? Yes. Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. Yes. Now Yes, sir. Yes, sir. we have 1 minute left. What you will do, you can left this meeting and you can join same meeting immediately. Okay. इकडे मार्क करायचंय का सर?